Greetings to all learners. Welcome to Saho PSC class. Today topic is national interest. ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ. One of the important topic of international relation. So let's have a discussion on this topic. What is national interest? ଆମେ ଆଜି ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. So national interest as the key determinant of international relation. ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ. National interest as the key determinant of international relation. ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ. ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି international relation as well as in international politics. So as we know that international politics is basically a process of struggle for power among the nation, whereby each nation try to secure goals of its national interest in international relation. ତ ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ପାୱାର ଏମଙ୍ଗ ଦ ନେସନ. ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ତାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି each nation, every nation try to secure the goals of its national interest. ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି. କାହିଁକି ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ to protect and preserve this interest while making relation with other states, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି to protect and preserve or fulfill their national interest. ନିଜର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ a muख्य responsibility of every state, every nation state. So in this way, national interest is a key concept in international relation. It is the basic concept, core concept of international relation. আন্তর্জাতিক जो संपर्क रही विषय बा आंतर्जातिक जो राजनीति रही तार गोटे मुख्य कनसेप्ट बा की कनसेप्ट धारणा होउछि हमर जातीय स्वार्थ by national interest. So all the nations, every nations are always engaged in the process of fulfilling or securing the goal of their national interest. तो समस्त राष्ट्र सबुबेले ସେମାନେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି କି they engaged in the process of fulfilling or securing the goal of their national interest. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗୋଲ୍ସ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି. And the foreign policy of each nation is formulated on the basis of its national interest. जो ବୈଦେଶିକ ନୀତି ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ତା କାହା ଆଧାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? On the basis of national interest. ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେସନ, ଆମେ इंडिया को एग्जांपल हिसाब नहीं पारिबा जे जेतेबेले कोनोसी फॉरेन पॉलिसी बा वैदेशिक नीति तैयारी करा जाउछि तो सेतेबेले सब बेले जातीय स्वार्थ को आखि आगे रखी ही से वैदेशिक नीति को तैयारी करा जाउछि. एंड इट इज ऑलवेज एट वर्क फॉर सिक्योरिंग इट्स गोल. एवं सब बेले एहार गोल्स को सिक्योर करबा पई कार्य करिथाय. तो ए जो फॉरेन पॉलिसी, द फॉरेन पॉलिसी बा वैदेशिक नीति कोन
ना प्रत्येक राष्ट्र ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡିଜାଇନ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପଲିସିକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ବିଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ନୀତି ନିୟମ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଲିସିକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେଇ ସବୁ ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ जो डिटरमिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी तार गोटे मुख्य बेस बा आधार ହେଉଛି नेशनल इंटरेस्ट जातीय स्वार्थ। So the history of this concept can be traced to the evolution of the modern state system। आम जदि यार उत्पत्ति कथा कहवा इतिहास कथा कहवा तो ताहेले यार ओरिजिन होइतिला बा आरंभ होइतिला जेतेबेले मॉडर्न स्टेट सिस्टम बा नेशन स्टेट सिस्टम रो आरंभ होइतिला। with the emergence with the origin of nation state system this concept also developed। এই মডার্ন বা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সহিত এই কনসেপ্ট এই ধারণার মধ্য আরম্ভ হইতিলা উৎপত্তি হইতিলা। So now we have to understand what is national interest। বর্তমান আমকু এই জাতীয় স্বার্থ কোন বুঝবাকু ହେବ। It is a vague and ambitious term that carries a meaning according to the context in which it is used। तो यह एक स्पष्ट शब्द यार कौन से एक सिंगल डेफिनेशन बा मीनिंग नहीं। देयर आर वेरियस डेफिनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कौन से एक प्रिसाइज मीनिंग बा सिंगल मीनिंग नहीं। दैट मीन्स इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स वेरियस मीनिंग्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। Several scholars have tried to define this concept। So in order to better understand this concept we have to discuss some definition given by some prominent figures like Hans J. Morgenthau, V.B. Dyke। तो अनेक गुटे डेफिनेशन अछि हम ए जगह दुईटी डेफिनेशन को बुझबाक चेष्टा करिबा। So Hans J. Morgenthau he defined national interest as survival। तो national interest कोन ना सर्वाइवल जो सर्वाइवल ऑफ स्टेट राष्ट्र जो अस्तित्व अछि जो तिष्ठि माने राष्ट्र किपरि भाव तिष्ठि रहिबो। That includes protection of physical, political and cultural identity। The survivor अर्थ कौन ना protection of physical, political and cultural। Physical means territorial जो factors रही territory जो रही राजनीति जो political system रही cultural identity जो रही तार protection against the encroachment by other nation state। encroachment अर्थ है attack। तो Hans J. Morgenthau मतरे नेशनल इंटरेस्ट एज सर्वाइवल जहा कि मुख्यतः इनक्लूड्स करि थाए बा बुझाई थाए प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को। एनक्रोचमेंट अर्थ है अटैक। तो अन्य राष्ट्र आक्रमण को जो स्टेट को जो स्टेट रो जो वाइटल कंपोनेंट रही तार प्रोटेक्शन को ही डिनोट करि थाए नेशनल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू Morgenthau। The second definition is given by V.B. Dyke। He said national interest is the values, desire and the interest that states seek to protect or achieve in relation to each other। जेते बेले के राष्ट्र माने संपर्क स्थापन करूछंती with each other सेते बेले प्रत्येक राष्ट्र से माने चेष्टा करथांती जो राष्ट्रर इच्छा अछि जो डिमांड्स अछि जो डिजायर अछि जो गोल्स अछि जो मूल्यबोध अछि जो वैल्यू अछि ताको प्रोटेक्ट करबा। So this value, desire, demands, goals and interest जो उद्देश्य अछि जो इच्छा अछि जो मूल्यबोध अछि राष्ट्रर ताहा ही डिनोट करि थाए नेशनल इंटरेस्ट। जो सबु ए जो इंटरेस्ट हला डिमांड्स हला गोल्स हला जहा राष्ट्र जेते बेले अन्य राष्ट्र सहित संपर्क स्थापन करबा जाउछि सेते बेले से ताको चेष्टा माने प्रोटेक्ट करबा को प्रिजर्व करबा पई सिक्योर करबा पई चेष्टा करथाए। ए सब होछि the national interest of the nation or states। So in general national interest can define तो साधारण भाषा रे आमे कहि परबा after going through these two definition आमे कहि परबा जनरल भाषा रे जे national interest as the claims, objectives, goals, demand and interest which a nation always try to preserve, protect, defend and secure in relation with other nations।
तार अर्थ है साधारण भाषा आम बुझा जे जातीय स्वार्थ होउछि कोन जे क्लेम्स ऑब्जेक्टिव उद्देश्य गोल्स डिमांड्स एवं इच्छा जो इंटरेस्ट रही प्रत्येक नेशन रो जहाँकि प्रत्येक इच नेशन ट्राई टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने चेष्टा करते सुरक्षित करने चेष्टा करते डिफेंड करने को चेष्टा करते सुरक्षित करने को चेष्टा करते जितेबले से कौन राष्ट्र सहित ऑब्जेक्टिव्स क्लेम्स डिमांड्स एवं गोल को आम मुख्यतः पार्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बोली कहूँ ताहाकु ही आम कहूँ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए स्टेट कंपोनेंट्स उपादान जातीय स्वार्थर उपादान गुड़िक सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जातीय स्वार्थर दुईटी उपादान मुख्य उपादान रही भाइटाल और नेसेसरी कंपोनेंट अत्यावश्यक बा जरूरी उपादान नॉन भाइटाल और वेरिएबल कंपोनेंट अण गुरुत्वपूर्ण बा परिवर्तनशील उपादान तो बर्तमान बुझा चेष्टा करवा भाइटाल बा नेसेसरी कंपोनेंट गुड़िक कौन दिस कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल और आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन गोटे राष्ट्र परिचय एवं तिष्टि रहिबा पई जो सब उपादान आवश्यक करथाए ताकू आमे कहू भाइटाल बा नेसेसरी कंपोनेंट अति जरूरी जो उपादान सेटा होची भाइटाल बा अत्यावश्यक उपादान मर्गेनथाउ सब डिवाइड्स आइडेंटिटी ना जो आइडेंटिटी रही गोटे नेशन रो बा जो सर्वाइवल तो तिष्टि रहिबा पई जो अस्तित्व रही गोटे राष्ट्र रो तार प्रोटेक्शन होची द प्राइमरी नीड्स ऑफ एवरी नेशन स्टेट तो आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन इज द vital component of national interest रो जो अत्यावश्यक जरूरी उपादान होची कण ना जो राज्य राष्ट्र रो जो परिचय अछि तार सुरक्षा सो मर्गेनथाउ सब डिवाइड्स आइडेंटिटी जो रही परिचय को मुख्यतः तीन पार्ट थ्री टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी कल्चरल आइडेंटिटी पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड फिजिकल आइडेंटिटी यह जगह भूल आसी जाइए तो यह आम डिलीट करदेबा सो द आइडेंटिटी कल्चरल आइडेंटिटी सांस्कृतिक मीन्स द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ ए नेशन जो ऐतिहासिक मूल्यबोध रही दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी पॉलिटिकल राजनीतिक जो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम रही जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था होची दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो निज जो गवर्नमेंटल सिस्टम रही जो प्रोसेस रही पार्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड फिजिकल मीन्स द टेरिटोरियल आइडेंटिटी जो निजर टेरिटोरी रही जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी रही सेटा होची फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ नेशन टेरिटोरियल आइडेंटिटी यह होची मुख्य उपादान कल्चरल वैल्यूज हिस्टोरिकल वैल्यू जोटा कल्चरल आइडेंटिटी जो पॉलिटिकल सिस्टम रही गोटे राष्ट्र पॉलिटिकल आइडेंटिटी एवं जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी रही जो भौगोलिक बा जो टेरिटोरियल परिचय रही फिजिकल आइडेंटिटी नेक्स्ट एटा हला नॉन वाइटल बार वेरिएबल कंपोनेंट ए कंपोनेंट गुडी बहुत दरकार प्राइमरी कंपोनेंट माने एटा होची सेकेंडरी दे आर सिचुएशनल एटा होची कोन ना सिचुएशनल सिचुएशन को आधार करी ही ए कंपोनेंट को ध्यान दिया जाए सो दिस कंपोनेंट आर डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस परिस्थिति ऊपर ही यह निर्भर करे बट मन रखी था जे एटा होची माने कंपलसरी इंपोर्टेंस वाइटल कंपोनेंट बट एटा होची सेकेंडरी that depend on circumstances situation so they are determined by the factors like decision maker public opinion party politics group interest
and also influenced by political and moral factors. तो यह जो डिटरमाइन करा जाइए माने जो नेशनल इंटरेस्ट को बा नेशनल इंटरेस्ट जातीय स्वार्थ एजारे काहर द्वारा डिटरमाइन होता है को फैक्टर द्वारा ना डिसीजन मेकर जो डिसीजन मेकर थांती तांकर द्वारा पब्लिक ओपिनियन जनमत आधार रे पार्टी पॉलिटिक्स जो राजनीतिक दल माने थांती तांको आधार रे ग्रुप इंटरेस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहिसंती देश मान करे तांको इंटरेस्ट को आधार करी करी এই কম্পোনেন্ট বা এই ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট কু ধ্যান দিয়া যাইଥାଏ এবং ତା ସହିତ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସମ୍ ରାଜନୀତିକ ଆଣ୍ଡ ନୈତିକ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଧାର କରି କରି ହିଁ এই ন্যাশনাল বা এই ଯୋଉ ভেরিয়েবল কম্পোনেন্ট গুড়িକୁ ডিଟরমাইন করা যাইଥାଏ সো দিস আর দ্য ভেরিয়েবল কম্পোনেন্ট and these are the vital component ଏହା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଏହା ସିଚୁଏସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏହା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ପ୍ରାଇମରୀ ନୁହେଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବର୍ଗୀକରଣ ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବର୍ଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସୋ ଥମାସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରବିନସନ classifies national interest into 6 types तो रॉबिन्सन से जातीय स्वार्थ को 6 प्रकार रे विभक्त करिसंती फर्स्ट हला प्राइमरी इंटरेस्ट प्राथमिक स्वार्थ सेकेंड हमर द्वितीय स्वार्थ बा सेकेंडरी इंटरेस्ट अछि तो आमे गोटे बुझिबा 6टा अछि तो प्रथमे आमे प्राइमरी इंटरेस्ट विषय आलोचना करिबा सो प्राइमरी इंटरेस्ट these are the interests that no state will ever compromise example preservation of physical political and cultural identity तार अर्थ है हम जो डिस्कस करथिले जे जो vital component रही ताकू आधार करी कोनोसी प्रकार compromise करि पारिबो नाही राष्ट्र and anyhow the state has to protect and preserve physical political and cultural by any means कोनोसी माध्यम रे by hook or crook by war जो कोनोसी बिल पंथा एडॉप्ट करी कि राष्ट्र कोन करबो जो तांकर प्राइमरी इंटरेस्ट अछि प्राथमिक स्वार्थ अछि ताकू परिपूर्ण करिवो एवं प्राथमिक इंटरेस्ट कोन जे ना जो जो फिजिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अछि भौतिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो परिचय अछि तार प्रोटेक्शन होछि प्राथमिक पार्ट ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट then secondary interest द्वितीय स्वार्थ कोन they are less significant than primary interest प्रथम अपेक्षा had कम significant and it include protecting citizens staying abroad and ensuring diplomatic immunity for diplomatic staff जो माने सब abroad रहउछंती तांकर इच्छा को प्रोटेक्ट करबा बा से मानकू नागरिक मानकू abroad रे जो विदेश रहउछंती तांको प्रोटेक्ट करबा एवं डिप्लोमेटिक स्टाफ सहित भलो कम्युनिकेशन संपर्क स्थापन करबा होची द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंटरेस्ट नेक्स्ट परमानेंट इंटरेस्ट ताई स्वार्थ कोन यह टाइम को आधार करी ही ए इंटरेस्ट को क्लासिफाई करा जायछि सो दिस आर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ स्टेट जो राष्ट्र रो जो अनेक गुडे इंटरेस्ट होछि दीर्घ दिन समय पर्यंत जो इंटरेस्ट रही ताको हम कहूँ स्थायी स्वार्थ फॉर एग्जांपल चाइना इंटेंड्स टू प्रिजर्व इट्स हेजिमोनी इन द साउथ एशियन रीजन जो चाइना निजर जो डोमिनेंस रही साउथ एशियन रीजन रे ताहा इंप्लाय करे द परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन जो स्थायी स्वार्थ माने दीर्घ दिन समय लॉन्ग टर्म धरिकी जो इंटरेस्ट रही थे ताको कहूँ आमे परमानेंट इंटरेस्ट एवं एग्जांपल होची जो चाइना जो इच्छा करिछि जे प्रिजर्व करबा पय निजर हेजिमोनी को निजर डोमिनेंस को इन साउथ एशियन रीजन जो साउथ एशियन रीजन अछि निजर प्रतिभा को विस्तार करबा निजर डोमिनेंस को सॉरी प्रतिभा नुहे तार डोमिनेंस को विस्तार करबा पय जो ट्राई करिछि चाइना सेटा होची एग्जांपल ऑफ परमानेंट इंटरेस्ट नेक्स्ट वेरिएबल इंटरेस्ट और परिवर्तनशील स्वार्थ दिस interest depend on the circumstances and can sometime bypass primary and permanent interest तो ये जो वेरिएबल इंटरेस्ट अछि ए होची
मुख्यतः कहा ऊपर डिपेंड करे ना सर्कमस्टांसेस सिचुएशन को ऊपर डिपेंड करे एवं सिचुएशन परिस्थिति को आधार करी कैन सम टाइम बायपास प्राइमरी एंड परमानेंट इंटरेस्ट जो परमानेंट एवं प्राइमरी इंटरेस्ट से ताको बायपास करिथाय एंड यह मुख्यतः डिपेंड करे कहा ऊपर सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ऊपर नेक्स्ट जनरल इंटरेस्ट साधारण स्वार्थ these interests apply to a large number of nations. For example, international peace, food security, environmental protection. साधारण इंटरेस्ट जो प्रत्येक राष्ट्र रो यूनिवर्सली जो इंटरेस्ट होइची ना टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट टू एंश्योर पीस एट द ग्लोबल लेवल एंड फूड सिक्योरिटी तो ए जो साधारण स्वार्थ रही साधारण मीन्स कॉमन इंटरेस्ट जो कहूँ दिस इंटरेस्ट अप्लाई टू ए लार्ज नंबर ऑफ नेशन यह मुख्यतः लार्ज नंबर ऑफ नेशन बा राष्ट्र पाई उपयुक्त बा अप्लाई फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पीस जो आंतरजातिक शांति रही जो फूड सिक्योरिटी रही दैट मीन्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ नेशंस नेक्स्ट एटा बुझेला एटा होची साधारण साधारण मीन्स कॉमन इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द नेशंस एग्जांपल टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट वर्ल्ड वाइड to ensure human rights all over the world and to ensure international peace यह होची part of general interest तो समस्त सबु वर्तमान सबु राष्ट्र चाहउछंती जे अंतर्जातिक स्तर रे शांति प्रतिष्ठा हो दैट इज देयर जनरल इंटरेस्ट समस्त नेशन चाहउछंती जे परिवेश प्रोटेक्ट हो परिवेश प्रदूषण रोकिबा पई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन परिवेश सुरक्षा पई चेष्टा करूछंती यह होची जनरल इंटरेस्ट कारण ए प्रोब्लेम टा कोनसी को निर्दिष्ट राष्ट्र पाई नय ए प्रोब्लेम टा होची सारा विश्व पाई एवं से विश्व रे से माने होचंती गुड पार्ट सो दिस आर जनरल इंटरेस्ट नेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट निर्दिष्ट स्वार्थ माने निर्दिष्ट ऑपोजिट ऑफ जनरल दिस इंटरेस्ट सूट पर्टिकुलर नेशन गुड पर्टिकुलर नेशन पाई उपयुक्त फॉर एग्जांपल राइट टू डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो एक निर्दिष्ट बा एते गुडी रीजन कोऑर्डिनेट करूची are not general general opposite होची specific interest for example right to development of third world country जो third world country माने होचंती backward country तो माने सेते मात्रा रे डेवलप न है as compared to US and UK so जो तांकर अधिकार होची डेवलपमेंट विकास सेवा पई ताहा मध्ये एक specific interest because वर्तमान समाज रे डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन और जो प्रॉब्लम रही क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग ये सब प्रॉब्लम जो रही तो जगह डिमांड करा जे जो डेवलपिंग कंट्री माने अछंती थर्ड वर्ल्ड कंट्री माने अछंती से माने मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करछंती फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ए क्षेत्र रे थर्ड वर्ल्ड कंट्री माने आगु को आसी कि से माने निजर राइट को निजर क्लेम को माने जाहिर करछंती एवं निजर जो डेवलपमेंट विकास पई जो अधिकार अछि ताहा दाबी करछंती एंड दिस इंटरेस्ट डिनोट द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ नेशन या होची निर्दिष्ट स्वार्थ निर्दिष्ट राष्ट्र पई बट एटा होची साधारण स्वार्थ मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट वर्तमान आमे यार पद्धति विषय रे आलोचना करिवा कोकु सब मेथड्स जनरली स्टेट अप्लाई to preserve and protect or securing its national interest तो राष्ट्र कोकु सब पंथा कोकु सब पद्धति ग्रहण करि थाए निजर जातीय स्वार्थ को सुरक्षित रखिबा पई एवं सुनिश्चित करिबा पई so there are various methods generally adopted by the state to protect its national interest the first one is diplomacy जहा को आमे कहूछु कूटनीति कूटनीति होची प्रथम पंथा जहा द्वारा राष्ट्र निजर जातीय स्वार्थ को सुरक्षित करिबा पई सुनिश्चित करिबा पई चेष्टा करथाय सो डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द परसुएसिव मेजर टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट एटा होची एक प्रोत्साहित पद्धति जहा प्रत्येक राष्ट्र ग्रहण करिथांती सो डिप्लोमेसी व्हाट इज डिप्लोमेसी Diplomacy can be defined as the practice of conducting negotiation, dialogue, and the interaction between states and other international entities to solve
many international problem to resolve war. ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା বা डिप्लोमेसी कूटनीतिर अर्थ काना गोटे प्रैक्टिस अभ्यास मुख्यतः कंडक्टिंग नेगोशिएशन जेतेबेले तांका भितर जो बुझमणा होउची जो समन्वय होउची राष्ट्र राष्ट्र मध्यरे जो शांति प्रतिष्ठा पाई जो संपर्क स्थापन पाई जो अभ्यास रहिची दैट इज डिप्लोमेसी सो कंट्री बा जाको आमे देश गुड़िक नेगोशिएट बार्गेन कंप्रोमाइज एंड कोऑर्डिनेट टू अचीव देयर डिजायर एंड तो जो तांकर उद्देश्य अछि तांकर जो आउटकम्स अछि सेतिफाई कंट्री माने कोन करंती नेगोशिएट करंती बार्गेन करंती कंप्रोमाइज करंती एवं कोऑर्डिनेट और समन्वय स्थापन करंती राष्ट्र राष्ट्र मध्य रे सेकेंड मेथड इज प्रोपागेंडा प्रचार जाको आमे कहू सो फ्रैंकेल हैज डिफाइंड व्हाट इज प्रोपागेंडा according to him propaganda as the systematic attempt to affect the mind, emotion, action of a given group for a specific public purpose. So, how a systematic attempt to affect, to influence the mind, actions, behavior of a given group of people for a specific public purpose. So, आम जदि याकू सिंपल भाषा रे कहिबा the propaganda involves the art of statesmanship जाकू आमे प्रचार राजनेतात्वर कला अंतर्भुक्त ए जगह रे लीडर्स माने निजर क्वालिटी इधर स्किल माध्यम रे जो वर्ल्ड पब्लिक रहिसंती तांको इन्फ्लुएंस करबा पई चेष्टा करथांती कोन से एक निर्दिष्ट ऑब्जेक्टिव हासिल करबा पई so it allows persuading other on the justness of their goal and to secure national interest. It is a way to convince the groups of people to achieve the desired object. Next, economic means অর্থনৈতিক উপায় rich and developed countries use economic aid loans to advance their interest in international arena. तो जो आंतर्जातिक क्षेत्र रही से क्षेत्र निजर स्वार्थ को जाहिर करबा पई जो डेवलप्ड कंट्री माने रही धनिक राष्ट्र माने रही से माने इकोनॉमिक एड्स और लोन जो आर्थिक साहाय्य प्रदान करुछंती गरीब राष्ट्र मान को ता माध्यम रे निजर इच्छा को पूर्ण करबा पई स्वार्थ को पूर्ण करबा पई चेष्टा करथांती सो पुअर कंट्री डिपेंड ऑन पावरफुल कंट्री फॉर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ फॉरेन एड इंडस्ट्री एंड फॉर सेलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स जो गुडे अछि अंतर्जातिक स्तर रे जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अछि कोर एंड पेरिफेरी जो रिलेशन टी अछि ताहाको मुख्यतः डिनोट करिथाय तो ए जगह गोटे कथा बुझबा को हेबो तो अर्थनीति हेउछ मध्ये एक माध्यम टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वन national interest at the international sphere. So, in this time of globalization, free economic free market economy has become an important means of securing national interest. वर्तमान समाज रे ग्लोबलाइजेशन समाज रे जो धनी स्टेट्स माने रहिसंती राष्ट्र माने रहिसंती तांको जो मुक्त बाजार रहिछि ता माध्यम रे से माने निजर इंटरेस्ट को निजर नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करबा पई चेष्टा करिसंती by giving economic aids and loans to the poor country backward countries तो जगह रे वर्तमान ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस मध्ये से डेवलप कंट्री माने ही स्टार्ट करथिले जो न्यू लिबरल पॉलिसी रहिछि इकोनॉमिक पॉलिसीज ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हेबार द्वारा गुटे बड़ लेस वर्ल्ड क्रिएट करा जाइछि जो जगह धनी माने निजर स्वार्थ पई गरीब राष्ट्र मान को एक्सप्लॉइट कोछन इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो नेक्स्ट alliances and treaty मेंटो एवं चुक्ति तो यह मुख्यतः आम देखा पाइथिला particularly in the times of cold war अनेक चुक्ति स्वाक्षर होइतिला इवन जो वर्ल्ड वार माने मध्ये होइतिला से समय रे मध्ये अन्य गुडे चुक्ति स्वाक्षर होइतिला सो दे आर signed between two or more country to secure their national interest alliances और treaty कोन ना निजर स्वार्थ हासिल करबा पई अनेक गुडे राष्ट्र मिसिकी अनेक गुडे चुक्ति स्वाक्षरित करथांते it becomes a legal obligation by allied country to work for the designated common goals तो जगह रे जो मेंबर्स माने थांती समस्त मिली मिसी ही काम करथांती
oblige କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ ଆଦେଶ ଥାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି ନାଟୋ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍ସପେକ୍, ଏ ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଲିଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ କୋଲ୍ଡ ୱାର ସମୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଟୋ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୱାର୍ସପେକ୍ ୟୁଏସଏସଆର। ତ alliance and treaty also one method to secure national interest. Last but not the least is coercive measures, जो बाध्यकता पदक्षेप बा coercive ର ଅର୍ଥ ବଳପୂର୍ବକ, by applying force the state use coercive measures to realize their goals and objective। ତ coercive measure ଅର୍ଥ ହଉଛି फोर्स माध्यमରେ नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करवा एवं प्रिजर्व करवा को ही डिनोट करता है। सो इंटरनेशनल लॉ आल्सो रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ कोएर्सिव मेजर्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ वॉर। ए जगह कोएर्सिव मेजर अर्थ वॉर माध्यम रे, युद्ध माध्यम रे हो, मिलिटरी एक्शन माध्यम रे हो, प्रत्येक राष्ट्र अनेक समय रे निजर इंटरेस्ट को प्रिजर्व करबा पई से माने कोएर्सिव मेजर्स बा दमनमूलक पदक्षेप एटागरे एप्रोप्रिएट हेबो। जो दमनमूलक पदक्षेप ए जगह बाध्यतामूलक, ताको हम एप्रोप्रिएटली लिखि परबा ओडिया रे दमनमूलक पदक्षेप। सो कोएर्सिव मेजर्स इंक्लूड इंटरवेंशन, एम्बार्गोज, बॉयकॉट, रिटेलिएशन, सेक्शन एंड severance of relation etc which state used to achieve their goals। जो अनेक गुडी कोएर्सिव मेजर रही छी, इंटरवेंशन जो रही छी, बॉयकॉट रही छी, सेक्शन रही छी, सेवरेंस ऑफ रिलेशन रही छी, ताहा पार्ट ऑफ कोएर्सिव मेजर्स। बा हम सिंपली भाषा रे कहि पारबा फिजिकल फोर्स, मिलिटरी फोर्स अप्लाई करी के मध्य गोटे स्टेट कोन करिवो निजर इच्छा को, निजर जो स्वार्थ को प्रोटेक्ट करि पारिबो, एन्श्योर करि पारिबो। एहा थिला ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन of or brief introduction on national interest। तो वर्तमान आमे किछि एमसीक्यू मु जगह रे प्रिपेयर करिछि फॉर जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती अनेक अछंती, इवन जो माने स्टूडेंट रहिछंती, तो अनेक गुडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मध्ये आसी थाए ए टॉपिक रो। तो मु किछि एमसीक्यू रेडी करिछि, प्रिपेयर करिछि, आमे जस्ट ताको टिके ट्राई करबा बुझबा पई। ए जगह अछि अनेक गुडी माने एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम वीडियो रे मु भाबिले किछि क्वेश्चन ऐड करले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सेटा स्टूडेंट मन को पई बेनिफिट हेबो। ता सहित अनेक गुडी जो सांग माने अछंती तांको मन को पई मध्ये या यूजफुल रहिबो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, व्हिच थ्योरी emphasizes the pursuit of national interest as a primary factor in the state behavior। तो ये जगह कहा जाउछि जे कौ थ्योरीटा मुख्यतः गुरुत्व दे थाए नेशनल इंटरेस्ट एज ए की फैक्टर्स और प्राइमरी फैक्टर्स। तो जेमिति कि आमे जानू, तो जो नेशनल इंटरेस्ट अछि, इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कांसेप्ट और इंपोर्टेंट टर्म्स दैट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ रियलिस्टिक अप्रोच। जो रियलिस्टिक वास्तववादी अछंती से माने ही मुख्यतः ए जातीय स्वार्थ कथा प्रथमे आलोचना करथिले। तो मुख्यतः यार आंसर कोन हबो? यार आंसर हबो रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली कंसीडर ए नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए स्टेट। एमन को मध्यर कोटा हमें टाइपिकली जातीय स्वार्थ गोटे राष्ट्र जातीय स्वार्थ हिसाब रे गणना करा जाय नाही। तो फर्स्ट ऑप्शन नेशनल सिक्योरिटी, यह पार्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ also part of national interest। कल्चरल प्रिजर्वेशन also part of national interest। तो एमान को मध्यरु ए तीनोटी हेउछि टाइपिकली कंसीडर ए नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। केवल सी नुहे, तो आंसर हेउछि हमर सी, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन is not typically considered a national interest of a state। Third question, number question, according to realist theory, where do states pursue their national interest? तो जो हमर रियलिस्ट अछन वास्तववादी तत्व अनुसार राष्ट्र काहे की ए जो नेशनल इंटरेस्ट बा जातीय स्वार्थ को परस्यू करबा पई चेष्टा करथाय बा परस्यू करथाय। परस्यूर अर्थ होउछ अनुधावन बा प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करबा पई चेष्टा करथाय। फर्स्ट ऑप्शन
to promote global cooperation, to maintain their power and security, to advance global human rights, to achieve economic equality. तो आमके देखिबा ए तीनोटी रियलिस्ट पार्ट रे आसुनाई रियलिस्ट माने कोन को काहा को इंपोर्टेंट दे थांती पावर स्टडी को सो पावर सिक्योरिटी आर द कोर थीम्स ऑफ realism or realist theory. In that sense, according to them or according to this theory, state काहे pursue करता है to maintain their power and security. Next, 4, who define national interest as the value, desire, and the interest that states generally seek to protect or achieve in relation with each other. The कार definition आमे दुईटी definition discussion करिथिले मॉर्गन थाउन को द्वारा दिया जाइतबा डेफिनेशन एंड वीबी डाइक को द्वारा दिया जाइतबा डेफिनेशन तो एमान को मध्यरु ए डेफिनेशन जनरली दिया जाइछि का द्वारा वीबी डाइक द्वारा हमर आंसर होछि बी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 डैश मेथड्स इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्सेस एंड पावर फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट तो आमे अनेक गुडे मेथड विषय रे आलोचना करिछु जेमिति के डिप्लोमेसी प्रोपागेंडा कोएर्सिव मेजर्स alliances and treaties. The 5 number question कहूची को method generally involve the use of forces तो आमे डिस्कस करिछु जे coercive it is a part of coercive method answer होची A. Next last question 6 the American interest to preserve its sphere of influence and to maintain freedom of navigation in all the oceans is the example of which kind of interest permanent general specific or short term यह होची परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका सो आज पाई एतिकी धन्यवाद।